Hello guys. I hope you all must be doing fine. I'm Samriddhi, and I welcome you all to episode 2 of Pseudo Feminism Overshadowed Feminism. Today we are very excited to have Advocate Kushagra Goel sir giving a very brief introduction about sir. Sir is a practicing advocate of Delhi High Court and he's also a panel member of MCT and TLSA. Welcome sir, and thank you so much for joining us today. Canonsphere is grateful for the same. To kickstart Thank with you. this episode, To kickstart with this episode, I would like to know that what is the role of judicial activism in the rights of the woman? Basically, our judicial system has been uh, started with the on the motive of the feminism only. If we see the penal code of our Indian Penal Code, so you may see all the uh, sections are against the men. There is no particular section that is against the women. So judicial system is very much clear that something has happened that has been happened against the female only. Okay, sir. So in modern times, we have seen that the rights of the women are grossly misused by the spouses in matrimonial cases. So have you ever Yeah. personally seen any cases involving the same? Yeah, there are multiple cases where women has misused their rights because in IPC there is one section that is 498A, cruelty against women, and there is one section in Domestic Violence Act, section 12. We have seen multiple cases under section 12 Domestic Violence Act and FIR in 498A. If nowadays husband and wife are living happily and because of singles dispute, female approach the women's cell. Women's cell, if female approach the women's cell, they simply call the husband and try to settle the matter one or two times sittings. Other after two or three, after maximum three times. After third time, they simply register a FIR against a man under 498A. That section is a non-bailable offense. But after the judgment of Anish Kumar, High Court has seen that there are multiple cases uh, which are registered against the male on false basis. Yes, sir. Just now you have stated that Section 498A of ICC is one of the Yeah, misused law in India. miss. But why this particular section is being mostly misused in the And 498A has been misused. That is why Honorable High Court has told in Anish Kumar judgment that the no police officials can arrest any of the male person or any of the family member without the notice. Nowadays, what we have seen that after this judgment, almost 99% states have stopped arresting the uh, males or spouse or relatives in after registering of 498A section. Sure, sir. So, do the lawyers often provide a package deal that includes the legal services for domestic violence maintenance and Section 498A of IPC in matrimonial cases? And what are the advantages and disadvantages for such packages for the clients? As of now, I have seen that there is no specific package because every lawyer charge according to their capacity or according to their years of practice. No specific package because every individual case is depend on the criteria on which the opposite side has filed. So there is no lawyer or a law firm who provides package for the same. And so the false accusations of rape and the outrage on modesty can have the serious consequences for both the parties involved. But how are such cases basically typically handled in this legal system, and what are the safeguards in place to prevent such false accusations? Yeah, this I'll tell you with one example. Recently, I had dealt with the one false rape case. That I tell you the story behind the case. That what has happened between the victim and the accused. Accused was residing in Bihar, and the girl visit to Bihar every year at the time of Holi only for a
10 to 15 days. In 2019, she visited first time in Bihar and met with the accused. And I'm telling you what she has what she made the complaint in the police station about the rape, and how I came to know, or a judicial officer came to know, that the FIR has been registered on the false statement, and the IO, investigating officer, has not done any investigation in particular case. What she had wrote in the FIR, I'll tell you. I use some Hindi word here. That मैं पहले अपने घर जो है मैं गांव में रहती थी, और 2019 में मैं पहली बार बिहार गई थी अपने पेरेंट्स के घर. यहाँ पे मैं रहती हूँ, वहां मेरा गांव है. 2019 में मैं बिहार में इससे ए नाम के व्यक्ति से मिली. ए नाम के व्यक्ति से मिलने के बाद ये मेरे को जबरदस्ती पार्क में ले गया वहां गांव में, और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करे. ये पहले उसका था. उसके बाद मैं हर साल गांव जाती थी, और हर साल ये मेरे साथ होली के टाइम पे फिजिकल रिलेशनशिप बना. फिर ये 2023 में जून में दिल्ली आया, हमारे कॉमन रिलेटिव थे उनके घर. उसने मेरे को वहां पर बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, मेरे मना करने के बाद भी. ये उसकी कंप्लेंट के क्रक्स थे जो उसने दिए. इस बेसिस पे उसने दिल्ली में एफआईआर रजिस्टर कर दी, क्योंकि उसने लास्ट जो अपना रेप का ऑफेंस दिखाया, या जो उसके साथ लास्ट इंसिडेंट हुआ, वो दिल्ली में हुआ. तो दिल्ली के बेसिस पे उसने एफआईआर रजिस्टर करवा दी. अब अक्यूज्ड को पुलिस ऑफिशियल्स ने, दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स ने बिहार जाके उसके घर से अरेस्ट करा आफ्टर द कंप्लेंट ऑफ विक्टिम. अरेस्ट करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी, वो अरेस्ट करके उसको ले आई. जिस भी सिचुएशन में वो अपने घर पे था, जो भी उसके पास था, इंक्लूडिंग हिज फोन और एक्सवाइजेड, जैसा भी था, उसको ऑन द स्पॉट अरेस्ट करा गांव जाके. जब ये केस मेरे पास आया, जज के सामने रिप्रेजेंट करा, चार्ज पे आर्ग्यूमेंट हुई. जज साहब ने कंप्लेंट पढ़ते ही, एफआईआर पढ़ते ही, सबसे पहले क्वेश्चन में से पूछा कि वकील साहब, आपने इसमें अभी तक बेल क्यों नहीं लगाई. और ये अरेस्टिंग के ऑलमोस्ट 45 डेज की बात है. 45 डेज. अगर वो 1 जुलाई को अरेस्ट हुआ था, तो ऑन 15 और 16 ऑफ अगस्त उसकी चार्जशीट फाइल हो गई थी आफ्टर 45 डेज. और जब कोर्ट में प्रेजेंट हुए, तो जज ने सबसे पहला कोर्ट में एंटर करते ही कि वकील साहब, आपने इसमें बेल क्यों नहीं दी. तो जिस पे जज को रिवर्ट दिया मैंने रिवर्ट दिया, सर, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में बेल लगा. जज ने चार्ज पे आर्ग्यूमेंट सुने. चार्ज पे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जज बोलते हैं मेरे से, इसमें मैं आईओ को, एसीपी को, एसएचओ को, डीसीपी को, सबको नोटिस कर रहा हूँ. मीनवाइल आप बेल लगा दो. बेल लगाई. बेल लगाने के बाद व्हाट वी सी नाउ डेज, जब भी हम फर्स्ट टाइम बेल प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, जज विक्टिम को कॉल करता है और उसका पार्ट जो है वो सुनता है कि क्या वो कहती है, कि उसके साथ क्या. जब वो कोर्ट में आई, जो उसने कंप्लेंट में लिखा था, उसने टोटली चेंज कर दिया. उसने बोला, मेरे साथ सब कुछ दिल्ली में हुआ है, गांव में कभी कुछ हुआ. पहली चीज, जिस दिल्ली में वो लोकेशन की बात बताती है, वो लोकेशन है स्कूल की. स्कूल के ऊपर एक रूम है. वर्किंग डे था, स्कूल में बच्चे थे. जिस रूम की वो बात कराती है, ऐसा कोई रूम था नहीं. एज पर द साइट प्लान इन्वेस्टिगेटिंग, पूरी स्टोरी टोटली चेंज. जज ने विक्टिम को बोला कि क्या हुआ था. 3 बार 4 बार पूछा क्या हुआ था. हर बार वो कभी नया पॉइंट ऐड कर देती थी, कभी पॉइंट माइनस कर देती थी. लास्ट में जज ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको बोला कि पीपी साहब, इसकी ये जो स्टेटमेंट है ना, आप पे और पुलिस वालों पे बहुत भारी पड़ेगी. और फिर जज ने मेरा पार्ट सुना, सारी चीजें हमने आर्ग्यूमेंट में दे दी. लास्ट में जज उसको, लड़की को बोलते हैं कि बेटा, शी माइट बी 23 और 22, बेटा, ये जो तुमने करा है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने के लिए तैयार हो जाना. हैंड टू हैंड जज बेल का ऑर्डर देते हैं. बेल का ऑर्डर 10 पेजेस का बेल ऑर्डर 376 में. बेल ऑर्डर में जज साहब क्या करते हैं, इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. डीसीपी को डायरेक्शन देते हैं
आईओ के अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट हो, और मेरे को कोर्ट में पुलिस ऑफिशियल्स के सामने, एसएचओ के सामने मेरे को बोलते हैं, वकील साहब एक रिक्वेस्ट है, जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स इस केस में इन्वॉल्व हैं उन सबके खिलाफ ना केस डाल देना कंपनसेशन का। सेक्शन में आपको बता देता हूँ, सेक्शन 195 सीआरपीसी, इसमें केस डाल देना, इसके अलावा मैं आपकी कोई और हेल्प नहीं कर सकता। सो इस पूरे सिनेरियो में, मैंने केस का एग्जांपल इसलिए लिया, इस पूरे सिनेरियो से हमें क्या पता लगता है कि जो हम केसेस कोर्ट में देखते हैं, जजेस को भी पता है कि कितने फॉल्स केसेस हैं और कितने एक्चुअल केसेस हैं। तो व्हाट वी सी कि 99% केसेस जो कोर्ट में रजिस्टर्ड है वो फॉल्स केसेस हैं, जो बेसिकली रजिस्टर्ड होते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे, फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुए, शादी से मना कर दिया, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, व्हाट वी सी, फीमेल्स आर डिमांडिंग मनी, इतने पैसे दे, हम तेरे अगेंस्ट केस नहीं डालेंगे। प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन इसमें बहुत इन्वॉल्व है, जो फॉल्स केसेस डालने के किसी के, फॉर एग्जांपल आज मेरा ए के साथ कुछ झगड़ा हुआ, मैं एक्स को अप्रोच करता हूँ, शी इज प्रोस्टिट्यूट, कि उसके अगेंस्ट हमें केस डालना है। व्हाट वी सी, वो पुलिस स्टेशन जाएगी, एफ कंप्लेंट देगी, और ए के अगेंस्ट रजिस्टर हो गया, मेरे से पैसे लेगी, बाद में ए से कहेगी कि मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दूंगी, अगर तुझे बचना है तो इतने पैसे दे। 99% केसेस कोर्ट में जो इस टाइम प्रेजेंटली चल रहे हैं वो फॉल्स केसेस हैं। जो 1% केसेस रियल होते हैं वो हम डेली न्यूज़पेपर में देख लेते हैं। Sir, what strategies or the safeguards can be implemented in this legal system to prevent the misuse of law and the legal processes in the context of the feminist causes? Basically, what we can do, we can make some particular act or some laws that if any case honorable court find that the same was registered against the male person, whether in section 376 or 498A, or any domestic violence complaint, or a complaint for the modesty of the women, or outraging her modesty, or complaint for stalking, or for using abusive words. If a honorable court finds that the same has been registered against the male person on the false ground, then the court should punish the female and also order the female to pay some damages and compensation to that person, and also apology letter or a apology in front of the court, in the open court, or in the society of the male where he was residing before the. So with this, sir, we have come to the end of the episode. It was a pleasure meeting you, sir, and your knowledge and your expertise was eye-opening, and we have gathered a valuable knowledge in this particular topic. Thank you very much, sir, for your time and consideration.